Hello friends, welcome back. Now in this chapter, we are going to study about some important techniques which come under the title biotechnology. That is the recombinant DNA technology, okay, recombination of DNA, tissue culture. Then we are also going to talk about PCR technique. Like you must have observed in the very famous serial which was CID. So there is one Dr. Salunke in the CID. He finds a hair near the dead body, and from that hair, from the root hair, he can determine whose DNA it is. So amplifying that DNA is called as polymerase chain reaction, and this is actually possible with just with a 300 base pair DNA. We can find out the entire DNA. We can amplify it and we can find out the entire DNA, and we can match it with the criminal's DNA and find out who has committed the murder. Okay, so anyway, now coming back. So, in this, ever since the days of René Descartes, the French philosopher, mathematician, and biologist of the 17th century, all human knowledge, especially natural science, were directed to develop technologies. So now, why this is you require maths as well as sciences, because this is a combination. This can also be called as bioengineering, okay, wherein you require a lot of statistical data, mathematical data, some softwares also. Okay, a branch of biotechnology is bioinformatics as well. So you require a lot of technology in this, a lot of engineering, mathematical requirement is there to analyze the DNA base pairs and uh, amplify them or maybe match them. Now if you go to this website, that is NCBI, you can just type NCBI on Google. Okay, and on the NCBI on Google, you can actually its online tools are available, which is one of the tools is the FASTA or the BLAST. BLAST is the basic local alignment tool. Okay, so in this tool you can actually go and you can take the DNA of mus musculus. Who's mus musculus? A mouse. And Homo sapien. Who's Homo sapien? Obviously humans. Then you can align both the DNA and actually check on your own how much is the similarity between a mouse and a human. Okay, similarly you can compare the DNA of a chimpanzee and a human. We'll find that 99.5% or 99% of DNA in a chimpanzee and human is the same. Okay, and all of you, I mean all individuals are also having around 99.5 to 99.9% of DNA to be similar, because all of us are having two ears, two eyes, one nose, one mouth, and all that, all those features, two hands, two feet. Okay, so all those features are common. That's why the DNA, this similarity in DNA is present. Okay, so this alignment of this tool, the tool which I was talking about, requires a lot of math. Okay, and because clever scientists have performed something called as the HGP, Human Genome Project, because of that it led to a new field called as bioinformatics, actually using the statistical data, the informatics, the IT into biology. Okay, then moving on to physics and chemistry, they gave rise to engineering technologies, as I've told you. Okay, and implementation of that in biology, okay, is nothing but biotechnology. So here you can write down that biotechnology, the 20th century offshoot of modern biology, changed our daily life as its products brought qualitative improvement in health and food. Okay, then there is one more person, Herbert Boyer. He grew up in Pennsylvania, and he completed his graduation at the University of Pittsburgh in 1963. And he was an important person in the HGP, the formation of the HGP Human Genome Project. Okay, so he discovered a couple of restriction enzymes in the E. coli bacterium. Now, what do you mean by restriction enzymes? So restriction enzymes are those which are restriction endonuclease, to be precise. They are known as biological scissors. They can splice or cut the DNA. Now in your college you must have also performed certain experiments wherein you have isolated DNA, maybe isolated DNA from fruits, because fruits are having living cells. Okay, like papaya, you isolate DNA from papaya. Now, but that is a mass of DNA. To cut a particular segment of DNA, we require restriction enzymes. These restriction enzymes are labeled with biomarkers at time, which make them specific so as to where they can splice or where they can cut the DNA. Okay, so restriction enzymes are known to cut. Now there are two types of cut. One is a staggered cut and the other one is a blunt cut. Now this is a staggered cut.
Okay, it is not simply cut like this. So a blunt cut does not produce sticky ends. That means you cannot rejoin the DNA to any other sequence. But when there is a staggered cut, you can rejoin. It is having sticky ends. It can be rejoined to some other DNA. Okay, then which is the DNA, which is the enzyme required for joining? The enzyme required for joining is DNA ligase. Ligase is the enzyme which will join the DNA, and restriction endonuclease is the enzyme which will cut the DNA. Okay, so I told you about sticky ends and blunt ends. Okay, so this is a staggered cut. Okay, and a simple straight cut would be a blunt cut. Okay, yeah, like this is a blunt cut. Okay, not a staggered cut. It cannot be used for pasting another DNA. Then Cohen studied small ringlets of DNA called as plasmids. Now, what are these plasmids? These are often found in bacteria. Okay, so bacteria में कैसा है? Bacteria is a prokaryote. It does not have a well developed nucleus. So उसका जो DNA material है, bacterial DNA material, वो open ही रहता है, उसमें कोई nuclear membrane नहीं है. So it is open. क्या? The bacterial DNA. So this open bacterial DNA also has an extra chromosomal DNA. An extra chromosomal DNA is called as plasmid. It's like Pakistan. Why do I call it as Pakistan? Because Pakistan has its own government, and sometimes the military of Pakistan also takes over as the government. The military in Pakistan is semi-autonomous. Okay, बीच बीच में वो जैसे तालिबान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ तालिबान, they took over, right? So similarly sometimes military also takes over. That is called as semi autonomous. So ये भी DNA, ये भी DNA है. This is extra chromosomal DNA. ये extra chromosomal DNA can also act as the main DNA, can supply information to the bacterial DNA, can cause changes into the bacterial DNA. तो ये extra chromosomal DNA जो है छोटा रहता है, वेक्टर बोल सकते हैं उसको, कैरियर बोल सकते हैं. इट इज अ प्लाज्मिड. हमारे लिए वो कैरियर है. तो हम लोग ने क्या किया कि ये प्लाज्मिड को निकाला. ठीक है, और जैसे वो मूवी में हेरा फेरी में क्या होता है, हेरा फेरी में वो बोलता है कि आपके पैसे मेरे को दे दो, मैं डबल करके आपको दे दूंगा. ठीक है, वो करता नहीं, वो बात अलग है, लेकिन इसमें ऐसा होता है क्योंकि एवरी 8 मिनट्स में ई कोलाई बैक्टीरिया क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है. मतलब इन द सेंस डिवाइड होके एक बैक्टीरिया से 2 बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से 8 बन जाते हैं, 8 से 16, एंड इट कैन कंटिन्यू लाइक दिस. सो इसमें इस प्लाज्मिड में अगर हम लोग ह्यूमन का कोई भी पार्ट, ह्यूमन डीएनए का कोई भी पार्ट अगर इंसर्ट करते हैं तो वो भी डुप्लीकेट होने लग जाएगा. We are going to talk about all this in detail. So this is just the introduction. So these plasmids, they float about in the cytoplasm of certain bacterial cells and replicate independently from the coding strand of DNA. ओके, सो जैसे प्लाज्मिड होता है वैसे कॉस्मिड भी होता है. कॉस्मिड ये वायरस में होता है. ये वायरस इस बैक्टीरिया को खाते हैं, इसके लिए उनको बैक्टीरियोफाज भी कहा गया है. ओके, कंबाइनिंग दिस प्रोसेस विद दैट ऑफ डीएनए स्प्लाइसिंग enabled the rDNA technology. rDNA technology which we are able to use in bacteria. We're going to study that in detail. Okay, then biotechnology deals with the techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes which are useful to human. Okay, so we have used this in obtaining the enzyme. One of the enzymes which we require in PCR technique is obtained from a bacteria called as Thermus aquaticus. अभी Thermus aquaticus bacteria क्या है? It is a bacteria which can survive at higher temperatures. क्योंकि naturally वो bacteria कहाँ पे रहता है? वो bacteria रहता है इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स. और हॉट वाटर स्प्रिंग्स में उसके देखो नॉर्मल एंजाइम या नॉर्मल डीएनए अगर आप हॉट वाटर में आए हायर टेम्परेचर पे लेकर जाते हो तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, दे विल डीजेनरेट. बट इसका थर्मस एक्वाटिकस का जो बैक्टीरिया है उसका जो एंजाइम लिया हम लोग ने, ठीक है, फॉर द पीसीआर टेक्निक. ओके, पॉलीमरेज एंजाइम ले लिया उससे, एंड इट वाज एबल टू फंक्शन इवन एट हायर टेम्परेचर बिकॉज पीसीआर में यू रिक्वायर हायर टेम्परेचर. सो वी ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस. देन वी हैव चेंज द डीएनए ऑफ सर्टेन एनिमल्स like transgenic animals बोल सकते हैं. Now transgenic animals like dolly sheep. तो dolly sheep was the first transgenic animal जिसमें हम लोग ने genes change करके we converted that sheep to to make her produce more and more wool or more and more hair so that we get more wool. Okay, then transgenic mice, मतलब उस animal mice के genes कुछ इस तरीके से change कर दिए कि उनको पोलियो भी हो सकता है. सर हमको क्या फायदा, हम लोग क्यों पोलियो करना चाहेंगे माउस को या माइस को? ठीक है, वो इसके लिए क्योंकि चेन्नई में एक ट्रेजेडी हुई थी. तो चेन्नई में ट्रेजेडी ये हुई कि छोटे बच्चों को पोलियो का डोज हो रहा था, 2 बूंद जिंदगी के, वो कैंपेन चल रहा था पोलियो का डोज. तो उस पोलियो के वैक्सीन में हुआ ये कि they were giving those vaccines but वो वैक्सीन ठीक से प्यूरिफाई नहीं होता. एंड यू वेरी वेल नो दैट वैक्सीन इज सेमी किल्ड और कंप्लीटली किल्ड वायरस. तो उसको ठीक से प्यूरिफाई नहीं किया गया था और उस पोलियो के वैक्सीन देने की वजह से जितने भी बच्चों को पोलियो का वैक्सीन दिया गया उन सबको पोलियो हो गया. राइट, एक्चुअली वो वैक्सीन था पोलियो से बचाने के लिए, बट क्या हो गया, उसकी वजह से ही पोलियो हो गया.
ठीक है, तो उसके बाद में डिसाइड हुआ, वो पूरा बैच को रिकॉल किया गया। ठीक है, इट वाज अ ब्लंडर इन द मेडिकल हिस्ट्री, राइट। तो उसको री कॉम्बैट करने के लिए हम लोग ने क्या किया कि भाई डायरेक्टली मार्केट में वैक्सीन देना शुरू नहीं करेंगे, पहले उस वैक्सीन को टेस्ट करेंगे। अब किसके ऊपर टेस्ट करेंगे? तुम तो तुम्हारी जान कुर्बान नहीं करोगे कि भाई तुम्हारे ऊपर टेस्ट किया जाए, तो हम लोग ये टेस्ट करते हैं एनिमल्स पर, राइट। तो एनिमल्स को अभी अगर माइस को मैं पोलियो का वैक्सीन दूं और उसमें एक्चुअल में पोलियो का वायरस है जो प्यूरिफाइड नहीं है, सेमी किल्ड नहीं है, और वो उसको पोलियो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पोलियो इज नॉट अ डिजीज विच कैन ऑकर इन माइस, राइट। माइस को पोलियो होता ही नहीं। सी, रिमेंबर दैट द ऑल दीज pathogenic factors, okay, virulent factors, these virulent factors which are there in bacteria or viruses, they are species specific. Species specific matlab kya? They are particular to a certain species, okay, like HIV can happen only in humans, okay, even dogs have multiple sex partners but they never get AIDS, राइट। एड्स नहीं होता, एचआईवी नहीं होता उनको, ठीक है, बिकॉज एचआईवी जो इन्फेक्ट करेगा वो ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। या फिर पोलियो होगा, ये पोलियो ह्यूमंस को ही अटैक करता है। लाइक रेड स्मट नाम का एक डिजीज है प्लांट्स में, वो प्लांट्स को ही होगा, ह्यूमंस को नहीं होगा। आप वो खा भी लोगे रेड स्मट वाला तो भी आपको अभी विप टेल डिजीज है ब्रिंजिल में, तो आप वो विप टेल वाला डिजीज वाला ब्रिंजिल खा भी लेते हो तो भी आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका बैक्टीरिया वो सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकता है, हमको नहीं कर सकता। सो विरुलेंट फैक्टर्स इज स्पीशीज स्पेसिफिक, पर्टिकुलर स्पीशीज के बैक्टीरिया पर्टिकुलर स्पीशीज को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो हम लोग ने क्या कर दिया, वो माइस को, क्योंकि उसको पोलियो नहीं हो रहा था, हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके जीन्स वैसे हैं, तो जीन्स हम लोग ने चेंज कर दिए बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, वी प्रोड्यूस्ड अ ट्रांसजेनिक एनिमल। और अभी उसके ऊपर पोलियो की वैक्सीन का टेस्टिंग किया, तो जिन जिन माइस को पोलियो हो गया, इसका मतलब वैक्सीन में कुछ गड़बड़ था, तो वो बैच हम लोग ने स्टॉप कर दिया मैन्युफैक्चर करना या उसको मार्केट में रिलीज करना। या फिर अगर वो किसी को भी पोलियो नहीं हुआ, मतलब वो बैच सक्सेसफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट कैन बी लेड आउट इनटू द market. Okay, so this is how biotechnology is helping us. Moreover, it is also helping us in food, making of bakery products or making of alcohol, making of curd, in सब में भी biotechnology हमको help कर रहा है। Okay, so the term used in restriction enzyme, the restricted sense today, to refer to such of those processes which are used जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो मैंने आपको बोला ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक में मैंने माइस वगैरह तो बोल दिया, डॉली शीप भी बोल दिया, कॉर्न इज ट्रांसजेनिक, सोया इज ट्रांसजेनिक, देन कॉटन सीड ट्रांसजेनिक, पपाया ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक राइस, ठीक है। ये तो बायो फोर्टिफाइड राइस, गोल्डन राइस भी अभी मिलता है। गोल्डन राइस मतलब इसमें ज्यादा विटामिन ए होता है। ऐसा स्पिनिच या पालक जिसमें ज्यादा आयरन होता है, ऐसे पोटैटो जिसमें न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट ज्यादा है, ऐसे टोमेटोज जिसमें सिट्रिक एसिड और उसमें एक एसिड रहता है, फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट, ओके, दैट उसका कंटेंट भी ज्यादा होगा, सो दैट यू गेट मच बेटर crop quality, okay, with better nutrients. Further, many other इसको कहते हैं biofortification, okay. Further, many other process techniques are also included under the biotechnology. Example, in vitro fertilization, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहा है, दिखाया है ऐसा, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब क्या कि एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, इन विट्रो मतलब इनसाइड द लैब। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि वी टेक द स्पर्म फ्रॉम द मेल एंड एग फ्रॉम द फीमेल, टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में थोड़ा उसको मल्टीप्लाई होने देते हैं, एंड देन वी इंसर्ट इट इनटू अ सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर मतलब इट्स नॉट द एक्चुअल मदर ऑफ द चाइल्ड, नॉट द बायोलॉजिकल मदर ऑफ द चाइल्ड, बट ऐसी मदर जिसमें हम लोग जो फ्री है प्रेग्नेंट होने के लिए, तो उसको ऐसा किया किसने? शाहरुख खान एंड हिज वाइफ, ओके। तो उन्होंने, शी डिड नॉट वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, पार्टीज में जाना था, घूमना था, तो शी डिड नॉट बिकम प्रेग्नेंट। तो लेकिन बच्चा उन्हीं का था, लेकिन ग्रो हुआ किसी और के वूम में, तो दैट इज आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें जिफ्ट और गिफ्ट टेक्निक्स भी आते हैं। जिफ्ट मतलब क्या? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट मतलब क्या? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, okay. So then another example of biotechnology is सिंथेसाइजिंग ए जीन, एक नए जीन को ही सिंथेसाइज करना। व्हाट इज जीन? जीन इज नथिंग बट डीएनए। तो अलग अलग बेस पेयर्स को कंबाइन रिकंबाइन करके एक नया जीन फॉर्म करना और उसको अपने हिसाब से यूज करना। तो हम लोग ने जीन इंट्रोड्यूस किया, किसमें इंट्रोड्यूस किया? कॉटन सीड में। कॉटन सीड्स में इंट्रोड्यूस किया जीन, ताकि ऐसा जीन जो बोलवर्म्स को मार गिराए, राइट। तो उसको कहते हैं बैसिलस thuringiensis, ये बैक्टीरिया, बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, ये बैक्टीरिया में से वो विरुलेंट फैक्टर का जो जीन है वो ले लिया और उसको सिंथेसाइज करके हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया कॉटन सीड्स में, सो दैट कॉटन सीड्स
are the new cotton seeds will produce new plants which will be resistant to bollworms. फिर उसके बाद में developing a DNA vaccine, right? अभी तो वैक्सीन का पूरा आपने कोविड के era में you have studied RNA vaccine, DNA vaccine and so many other things. So all that is with the help of biotechnology. Then correcting a defective gene. Now ये तो बहुत बड़ा अभी इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है, that is curing of the genetic diseases को क्योर करना. कि एक कोई बच्चा है उसको एरर हो गया है, उसको कहते हैं एरर को कहते हैं एबरेशंस. तो एबरेशंस हो गए हैं जिसकी वजह से 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी है, ठीक है, विच इज लीडिंग टू डाउन सिंड्रोम. और 23rd क्रोमोसोम पे यानी कि सेक्स क्रोमोसोम पे देयर इज सम प्रॉब्लम, okay, that is leading to Klinefelter syndrome, okay, or it is leading to monosomy or trisomy, or fifth arm, short arm of the fifth chromosome delete हो गया है, तो उसको that will result in Cry-Du-Chat syndrome. The baby cries like a cat. That is called as Cry-Du-Chat syndrome. Okay, so that is correcting a defect. तो उसको भी treat करने के लिए we are using biotechnology. So the European Federation of Biotechnology has given a definition of biotechnology that combines both the traditional as well as the modern molecular emphasis. This is the definition of biotechnology. Please write down. Right? Biotechnology is the integration of the natural science and engineering, जो मैंने आपको starting में बोला, in order to achieve the application of organisms, cell parts thereof, and molecular analogs of for products and services.